Hello all, I'm audible to all of you. Yes, sir. Okay. So in the previous session, we have understood the introduction of the government budget, like what is government budget, how it is introduced into the parliament, who introduced the government budget. Now, what exactly is there in the government budget that we will see. Now, along with government budget, there is one more important document which is presented in front of the parliament just one day before the government budget is introduced, or government or the budget speech is introduced, or it is given in front of the parliament. Anyone knows what is that document? गवर्नमेंट बजट से एक दिन पहले पार्लियामेंट में एक और डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, वन डे, जस्ट वन डेज बिफोर द बजट इज इंट्रोड्यूस्ड. शुभदीप, एनी आइडिया अबाउट इट, व्हाट इट इज? शुभदीप, मेरी आवाज नहीं दे रही है, ऑडिबल टू यू शुभदीप? Yes, sir. Yes. So which is the document? Sir, I have no idea about the put in front of the parliament just one day before the budget is introduced into the parliament. Yes, sir. I have no idea about this document. Okay, fine, no problem. Yes, Sagar, what is the document which is introduced into the parliament just one day before the budget is introduced? Economic survey. Yes, it is called Economic Survey of India. Right, Shubhadeep? Have you ever heard about Economic Survey of India? Yes, sir. Shubhadeep, क्या आपने Economic Survey of India के बारे में सुना है? Yes, sir. सुना तो है, लेकिन मतलब ये पता नहीं था कि बजट के एक दिन पहले आता है. Yes. तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया या बजट के एक दिन पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है. जब इस साल का जब गवर्नमेंट बजट जब आएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल का इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है. अब ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में और गवर्नमेंट बजट में क्या फर्क होता है? एनी आइडिया, ये दोनों में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट बजट? Yes, Mustafa. What is the difference between the economic survey of India and government budget? सर, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है सर, प्रीवियस ईयर जो गवर्नमेंट ने जो टारगेटेड दिए थे वो कितने अचीवमेंट किए ये बताता है. और गवर्नमेंट बजट सर आने वाले एक साल में गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू मिलेगा और गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगा और कितना बोरोइंग करेगा, ये बजट में बताया होता है सर. यस, परफेक्ट. So government budget is a futuristic part. गवर्नमेंट बजट मतलब आने वाले साल भर में क्या अंदाजा गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलेगा, अंदाजा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगा और अंदाजा गवर्नमेंट कितना बोरो करेगा, उसका एक अंदाजा होता है. तो पिछले साल भर में जो गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट किया था बजट में, उस एस्टिमेशन के हिसाब से क्या अचीव हुआ है और क्या अचीव नहीं हुआ है, वो उसका एक जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है. And that document is called as Economic Survey of India. मतलब Economic Survey of India क्या होता है? Economic Survey of India is a document which gives the number and figures about the previous year government budget's achievements. मतलब पिछले साल के गवर्नमेंट बजट में जो टारगेट रखे गए थे, उन टारगेट में जो एस्टिमेशन किया गया था, उस एस्टिमेशन में से क्या अचीव हुआ और क्या अचीव नहीं हुआ. मतलब जो रेवेन्यू एस्टिमेशन किया गया था, जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन किया गया था, जो एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन किया गया था, उसमें से कितना अचीव हुआ, उसका एक फाइनल डॉक्यूमेंट दिया जाता है इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. सो एवरी ईयर along with government budget, which is an estimation for the upcoming year, the previous year's government performance with respect to the revenue, with respect to the expenditure, with respect to the borrowing is published into a document, and that document is called as Economic Survey of India. So basically you can say the final the performance or the final achievement of the government budget is reflected into the Economic Survey of India. Is it clear? समझ में आ गया दोनों में फर्क क्या है इकोनॉमिक सर्वे में? तो इकोनॉमिक सर्वे जब इस साल का इकोनॉमिक सर्वे जब पब्लिश होगा, तो उस समय में हम देखेंगे कि पिछले साल गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखे हुए थे, पिछले साल गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना एक्सपेंडिचर मिलेगा, कितना बोरोइंग करेगा, उसमें से कितना अचीव हुआ है वो इस साल के इकोनॉमिक सर्वे इंडिया में पता चलेगा. Now what is there? What are the various components in the government budget? Government budget जब बनाया जाता है तो वो गवर्नमेंट बजट में क्या क्या होता है? What are the various components in the government budget that we can see? In government budget there are two accounts. One is called revenue account and another is called expenditure. और उसके अलावा एक और अकाउंट होता है that is called borrowing account. मतलब गवर्नमेंट ने
अगर कुछ बोरो किया है तो वो बोरोइंग में होता है, वो बोरोइंग वाला हम बात में। अभी फिलहाल अभी इतना ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट बजट में देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड व्हाट इज द गोइंग टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू and what is going to be the government expenditure this year. So revenue में again you can see in the government revenue there are two types of revenues of the government के दो टाइप के revenues है, one is called tax revenue and another is called non tax. मतलब गवर्नमेंट को दो तरीके से रेवेन्यू मिलता है। कुछ रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की इनकम या गवर्नमेंट का क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट का जो जहां से पैसे मिलते हैं वो, द गवर्नमेंट इम्पोज सम टैक्सेस, that is government receives money from the tax and there are some non tax revenues as well. गवर्नमेंट के टैक्स के अलावा भी कुछ और इनकम सोर्सेस है, उन्हें हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। So revenue account has two further sub accounts, one is called tax, one is the non tax revenue. अब ये non tax revenues क्या क्या होते हैं, what are the examples of the non tax revenues of the government, that I will explain you later. Now coming back to the tax account. So in tax there are two types of taxes. टैक्सेस में गवर्नमेंट दो टाइप के टैक्सेस इंपोज करता है ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री एंड एज वेल एज द एंटिटीज, एंड दीस टू टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस व्हिच इज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस एंड अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम टुडे. तो टॉपिक क्या है, द टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया. सो गवर्नमेंट बजट के टैक्स रेवेन्यू वाले पार्ट में गवर्नमेंट दो अलग अलग तरीके के टैक्स लगाया जाता है. डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, उसको हम समझेंगे. फिर कितना उस साल में गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेस से इनकम मिलेगा और कितना इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलेगा, ये गवर्नमेंट बजट में क्या किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है. सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज टैक्स? टैक्स मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, पता है आपको? All of you know government impose some taxes. तो ये टैक्स होता क्या है? या ये टैक्स को गवर्नमेंट लगाता क्यों? Why the government imposes tax on the people? Yes. So we have any idea what is tax or why the tax is levied or why the tax is imposed on the people of the country? So tax is the amount of money imposed on every citizen of India according to their income. Is tax Citizen of India every citizen of India? according to their income. तो क्या हर किसी को इनकम टैक्स पे करना होता है? क्या पे करते हैं इंडिया में? No, I guess only for the ones who have government jobs. It's not like that. Even the people, those who are having very high income in private industry, they also pay the tax. Like in fact, government servants से ज्यादा पैसे तो बिजनेसमैन कमाते हैं, तो उन्हें ज्यादा टैक्स लगता है. गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा टैक्स प्राइवेट लोगों को लगता है, बट सभी को नहीं लगता. यस शिवानी. Yes, sir. So government tax is the legal and it's a parts of our income, and there is a different way to tax pay many people. Like if the income is 2,50,000, so tax will be 5%, and if the income is 2,50,000 above, so then the tax will be 10%. So, and there is a different types of taxes, and which include their income basis, and on not all the people pay the taxes, only those people who pay the taxes which people's our income is high level, like in the lakh, like 250 lakhs above the incomes. Okay, fine. So yes, Shivani, whatever you have said, you are right, but the figures are not correct. Right now, the income or taxable income is around 5 lakh. जिनका इनकम 5 लाख एंड अबव होता है उन्हें इनकम टैक्स पे करना होता है. अब ये इनकम टैक्स तो एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है. अब आपको ये जो नंबर है 5 लाख है या 10 लाख है या 6 लाख है या 2 लाख है 2.5 लाख है, ये नंबर हर साल गवर्नमेंट चेंज करता है. मतलब उस साल गवर्नमेंट का जो बजट होता है ना, तो उस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि कितने इनकम टैक्स लगाया जाए और कितने इनकम टैक्स ना लगाया जाए. मतलब how much amount of the income should be a taxable income. So it could be 5 lakh, it could be 6 lakh, it could be 7 lakh. It is, of course, it is ultimately decided by the government.
तब ये जो हो गया, आप जो बता रहे हो वो इनकम टैक्स है। तो इंडिया में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, उसके अलावा भी और बहुत सारे टैक्सेस है। इनकम टैक्स जो लगता है वो इनकम पे लगता है, आपका जो भी इनकम टैक्स लगता है। अब इनकम टैक्स आपको क्यों करना होता है, मुझे ये बताइए कि व्हाई पीपल शुड पे द टैक्स फॉर अर्निंग मनी। लोग अब अपना मेहनत करके अपना इनकम बढ़ा रहे हैं, मेहनत करके अपना पैसा कमा रहे हैं, तो लोगों को उसके बदले में टैक्स क्यों पे करना चाहिए गवर्नमेंट को? So tax is used for the benefit of people only. सॉरी, Tax is used for the benefits of people, like the amount of tax which is for the collected benefit of the people. How? by putting up street lights or by all the things which benefits the public. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो पैसा लेता है आपसे, चलो इनकम टैक्स एक हो गया, इनकम टैक्स के अलावा और भी टैक्सेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इनकम टैक्स। लोगों ने आपसे इनकम टैक्स ले लिया, अब गवर्नमेंट आपसे जो इनकम टैक्स लेता है वो क्यों लेता है, ये एक सही पहला सवाल है। आपसे इनकम टैक्स क्यों लेता है, और दूसरा जो इनकम टैक्स लेता है उन पैसों का करता क्या है? यस, यस सोफिया, आप सभी लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट जब इनकम टैक्स लगाता है तो इनकम टैक्स क्यों लगाता है, या आपको टैक्स क्यों इम्पोज करता है, और जब टैक्स और जो पैसे लिया जाता है उन पैसों का गवर्नमेंट करता क्या है? Now I'll explain you how this taxation system works in optimum utilization of the resources or optimum utilization of the fund, the financial resources of the country. अब यहाँ देखिए, जैसे आपने देखा होगा, शुरुआत में मैंने बताया था कि लोगों का जब इकोनॉमी में जब इनकम बढ़ता है तो सभी लोगों का इनकम नहीं बढ़ता है, कुछ ही लोगों का इनकम बढ़ता है और कुछ लोगों का इनकम नहीं बढ़ता, या कुछ लोगों का इनकम कम होता है। सम पीपल आर वेरी रिच एंड सम पीपल आर वेरी पुअर। India economy is such an economy, तो इंडिया में there is a huge income inequality in India. तो इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी, कुछ लोगों का इनकम ज्यादा है और कुछ लोगों का इनकम कम है। इनकम कुछ लोगों का ज्यादा है, those who are in government job, those who are having business, those who have access to the economic resources, those who have access to the banking system, so इन सारे लोगों का इनकम ज्यादा है। तो इनसे इनकम टैक्स क्यों लिया जाता है? Because why the income tax or why the taxes are imposed by the government? The reason is that कि टैक्स इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान में रखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक इज व्हाट, बैंक का एक डेफिनेशन है, द बैंक इज सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज गॉट अ लाइसेंस ऑफ बैंक फ्रॉम द लाइसेंस ऑफ द बैंक फ्रॉम द आरबीआई, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बैंक। सिमिलरली टैक्स ये क्या है? टैक्स इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर किसी व्यक्ति का इनकम अगर 50 लाख है, किसी व्यक्ति का इनकम 1 करोड़ है या 10 करोड़ है या 50 करोड़ है या 1000 करोड़ है, और कुछ लोगों का इनकम सिर्फ 10,000 है, 5,000 है, या 1 लाख रुपया है पूरे साल भर में, या 2 लाख रुपए साल भर में। ये इसलिए है बिकॉज जिन लोगों का इनकम ज्यादा है उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली। किस चीज की अपॉर्चुनिटी मिली है? दे हैव गॉट एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, दे हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेस टू द एजुकेशन, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, एक्सेस टू द बैंकिंग सिस्टम, एक्सेस टू ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और उसी वजह से उनका इनकम बढ़ा है। तो जो आप टैक्स पे करते हो ना गवर्नमेंट को, दैट इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आप गॉट इट? व्हाई द टैक्स इज इम्पोज्ड? बिकॉज़ आपका जो इनकम, आपका इनकम 10 लाख रुपए, आपका इनकम 20 लाख रुपए, ये क्यों है? बिकॉज़ गवर्नमेंट कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज आपको दे रहा है, और उन फैसिलिटीज का इस्तेमाल आप कर रहे हो, और इसी वजह से आपका इनकम है, तो उसके बदले में आपको गवर्नमेंट को कुछ देना चाहिए। सो टैक्स इज नथिंग बट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। All have understood what is tax? Sobia, Archana, Shivani, is it clear to you? What is tax? Tax is an opportunity cost. मतलब जिन लोगों का इनकम ज्यादा है उन्हें ही टैक्स क्यों लगाया जाता है? Because उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है। अब जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, जिनका इनकम ज्यादा है, उन लोगों से टैक्स लेकर गवर्नमेंट क्या करेगा? जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिले इसका मतलब क्या है? कि they did not have access to education, they did not have access to hospitals, they did not have access to economic resources, they did not have access to to the banks, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, they were lacking the opportunities। तो इनके पास से पैसे लिया जाता है, इनके पास से जिनको अपॉर्चुनिटी मिला है, अब उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है for providing facilities and for providing the services to these people। तो देखिए, शोभिया से
कि दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। बेनिफिट ऑफ मतलब कौन? जिन लोगों का इनकम ज्यादा है, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल है, दिस पीपल आर फॉर्चुनेट पीपल, दे हैव देयर वेरी गुड इनकम, they can afford their, they can afford food, they can afford, education, they can afford hospital, they can afford private vehicle, इन सारे लोगों के पास में है, लेकिन इनके पास से लेकर ये ट्रांसफर किया जा रहा है। सो दिस इज एक्चुअली टैक्सेशन एंड वेलफेयर पॉलिसीज। मतलब पोस्ट गवर्नमेंट क्या करेगा फिर, कि इन लोगों के पास से पैसे लेंगे, इनके पास से टैक्स लिया जाएगा, और इन टैक्स का इस्तेमाल, इन पैसों का इस्तेमाल गवर्नमेंट करेगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो उन्हें स्कूल दिया जाएगा, उन्हें हॉस्पिटल फ्री में दिया जाएगा, उन्हें रोड बनाया जाएगा, उन्हें फ्री में क्या दिया जाएगा, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, उन्हें एनकरेज किया जाएगा, सो दैट दे कैन आल्सो गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट? आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी में ये मेंशन किया गया है that the state shall try to create such economic system where that everybody is getting equal access to the material resources, natural resources, and अगर उन लोगों को नहीं मिलता है तो आर्टिकल 41, 42, 43, 45, 46 में सारे डीपीएस में ये कहा गया है कि जिन लोगों को मदद की जरूरत है उन्हें गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है उन्हें एजुकेशन देना चाहिए, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है उन्हें खाना देना चाहिए, जिन्हें फूड नहीं मिल रहा है उन्हें फूड देना चाहिए, जिन्हें काम नहीं मिल रहा है उन्हें काम देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है। तो टैक्स क्यों लगाया जाता है? कि जिन लोगों के पास में इनकम ज्यादा है, यहाँ से ये पैसे लिए जाते हैं, यहाँ लिया जाता है, गवर्नमेंट के पास में आता है, फिर गवर्नमेंट इसको वापस से उन लोगों के पास में दिया जाता है कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सो टेकिंग टैक्स फ्रॉम द पीपल एंड यूजिंग इट फॉर द वेलफेयर पॉलिसी इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गॉट इट? तो इन लोगों के पैसों से ये जो लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं जिन्हें एक्सेस नहीं मिला, उन लोगों की वेलफेयर पॉलिसीज की जाती है। सो इन दिस वे इट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब जिन लोगों का इनकम ज्यादा है, इस तरीके से इनकम इनइक्वालिटी जो है इंडिया में या इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर हाई इनकम इनइक्वालिटी है, उस हाई इनकम इनइक्वालिटी को लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाता है। Got it? What is the objective of the government budgeting and why the taxes is imposed and why the tax is taken from the people and why this money is used for the welfare of the people. Is it clear to all of you? ये समझ में आ गया? So how government budget and how taxation policy or how the government budget is also one of the way through which we are utilizing our resources optimally, our financial resources optimally. Yes, Sophia. So the income of businessmen and businesswomen keep fluctuating according to their profits and loss. So how is their tax decided? Income of the people is fluctuating, you are saying? Business people, like businessman, businesswomen. बिजनेस पीपल का देखिए, उनके पास अगर जितना टैक्सेबल इनकम है उतना इनकम है तभी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। अगर उनका इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है तो दे आर नॉट सपोज्ड टू पे द टैक्स। मतलब मिनिमम अभी फिलहाल गवर्नमेंट का जो लास्ट ईयर का जो बजट था, एज पर द लास्ट ईयर बजट ऑफ द गवर्नमेंट, द टैक्सेबल इनकम वाज 5 लाख। मतलब जिन लोगों का इनकम 5 लाख या उससे ज्यादा है उन्हें टैक्स पे करना होता था। जिनका इनकम 5 लाख से कम है उस साल भर में, उन्हें टैक्स नहीं पे करना है। तो अगर किसी बिजनेसमैन का अगर लॉस या उनका इनकम ही नहीं हुआ है 5 लाख रुपए तक, तो उन्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टैक्स जो होता है वो उस साल भर के लिए होता है, उस साल में, मतलब अभी आने वाले साल में, अभी गवर्नमेंट बजट 23-24 का गवर्नमेंट बजट होगा, तो आने वाले साल में 23-24 में जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि 23-24 में अगर लोगों का इनकम 5 लाख है तो उन्हें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 लाख से ऊपर है तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। और कितना पे करना पड़ेगा वो भी गवर्नमेंट बताता है कि 6% पे करना है या 10% पे करना है या 15% पे करना है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि टैक्स कितना पे करना है। व्हाट इज सोबिया? Yes, sir. ठीक है। सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज नथिंग बट अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया आपको? टैक्स इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या समझ में आ गया? कैसे? Yes, So sir. the people who are paying the tax like income tax, or the people who are doing business उनको जीएसटी टैक्स पे करना पड़ता है या अलग-अलग टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ये टैक्स इसलिए है because those people who are having high income, they have got an opportunity to earn money, they have got an opportunity to have high income, and that is why they have to pay
to the government, and tax is nothing but an opportunity cost. ये जो भी टैक्स लिया जाता है, that tax is used by the government for those people who do not have the opportunity for their education, for their skill, for their employment, for their hospital, for their health, for their या फिर उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम करता है. समझ में आ गया? Is it clear, Shivani? Yes, I understand it. Okay, so now today we'll stop here. Tomorrow we'll continue and discuss in detail the direct taxes. What is the difference between direct taxes and indirect taxes? What are the examples of the direct taxes? What are the examples of the indirect taxes? And what changes, what reforms, what पिछले 2-3 साल से या पिछले 8-10 साल में इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में कल डिस्कस करते हैं. क्लियर? Okay, sir. चलिए. So we will stop it here now. We'll continue tomorrow at the same time. Is it okay to have the class between 9 to 10 or 8:30 is okay for you? Actually, I try to take class at 8:30, but sometimes it becomes difficult for me to take class at 8:30. So whenever I reach home, I take the class. So I'll try to take it at 8:30, but अगर नहीं होता है तो we will have it between 9 to 10. Fine, Shubhadeep? Yes, sir. So we'll stop it here now. We'll continue tomorrow. Tomorrow morning, देखिए सभी लोगों ने कहा था 8:30 को न्यूज़पेपर की क्लास ले लीजिए. I've taken the class at 8:30 in the morning, but only 2 or 3 students have joined the newspaper class. So as per your request only, I have shifted the timing from 9:30 to 8:30. All of you please join at 8:30 newspaper class. Saima, Sobia, you can also join the newspaper class because 8:30 को शायद आपका क्लास नहीं होगा, right? Yes, sir. So you can join the class if you are on the way to the college. आप on the way जब होते हो तभी आप उसको न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो. Try to utilize your time properly, have a proper time management so that सारी चीजें आपकी कवर हो जाए. Whatever the time is available with you. Okay, sir. चलिए. So good night.